Hello friends. In last video we have gone through the introduction of the rate analysis. In this video we are going to see the rate analysis of the 9 inches brick masonry. Okay. Here is the Excel format. In there is material rate. Detailed material rate is there from basic material like cement, fly ash, river sand, crushed sand, aggregate. Okay, I have taken these rates from the market. Ready mix concrete, brickwork like brick 4 inches, 6 inches, solid concrete blocks, Siporic blocks, salwood, mortar 40 kg. This is mortar required for the Siporics. Then waterproofing compound, China mosaic, soil for backfilling, murum. Then the plywood rate is there, the metal used for the shuttering plus the normal plywood. Welded mesh, usually it is required in the this type of a welded mesh is required in the flooring. Okay, lock set is there, structural steel metal rates are there. Then in some contractor there is from the piling excavation, basically excavation backfilling is the totally subcontracting item. Okay, because we usually do not hold any machinery, basically the high-end machinery like JCB, Oakland, dumpers. Okay, usually we trade that item directly to the whoever have the machineries. So it is total subcontract item. Then the concreting item, it will be this is the concreting labor cost, concrete casted on the site with the help of the pump. Then the shuttering labor rate is there. Then the cutting of pockets, this minor items, everything is detailedly listed. Then the wastage factor as seen in last factor, and this sheet is directly linked with the the rate analysis sheet. The cement coefficient, sand, metal, reinforcement, marble, yes, I corrected, it's 20% quota, and brick blocks, वगैरह. Okay, this is the wastage factor. This is the abstract sheet. In this sheet, the BOQ atom is there. Then the description of the atom is there. Here you will see the clear-cut BOQ description of the atom. Clear-cut. Even the technical specifications are there. This is the abstract sheet. In the direct cost, indirect cost, total markup, and sale price. And the whole thing is coming from the rate analysis sheet. This is the quantity, wastage, total quantity, unit, and rate. Here some coefficients are came for cement 9 inches thick brickwork in 1:6 ratio up to plane. The mortar, the link is there for the mortar calculation. So for 1 square meter, if the brickwork ratio is 1:6, that time we need 0.33 bags, and river sand is 0.08. Okay, how it is calculated, we will see the thing, because this is the main thing. Okay, and the number of bricks, these three factors I have calculated individually. So now we will see the mortar calculation, and then because this is the main thing actually, how the quantity is calculated for the 1 square meter. So we'll see the mortar calculation. Average brick size, whatever means, there is probably 5 to 10 mm difference is there, whatever you are getting, just you calculate actual size on the site. Here I have taken 230 mm by 100 by 70 mm. It's 9 inches brick. Okay, just add to it, we need to check the physical properties of the bricks, like the size of brick, angle of the it's in particular 90, fog is clear, means the fog's depth, because it's interjoined the top layer of second layer of it. Then the water absorption should not be more than 20. Then it should not be burn, ज़्यादा बर्न भी होना नहीं चाहिए और बहुत कच्चा भी ईट नहीं होना चाहिए. यूजुअली हम लोग 5 से 6 फीट से ब्रिक्स नीचे डाल देते हैं, और ऑन दैट बेसिस हम लोग क्वालिटी चेक कर लेते हैं
ये फिजिकल एक्टिविटीज भी चेक होनी चाहिए. तो ठीक है, ये सब्जेक्ट तो अलग है एज अ क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू. विल कम टू आवर रेट एनालिसिस पॉइंट. द साइज ऑफ individual brick is 230 by 100 by 70 mm. On that basis, I have calculated the volume of one brick, and then the mortar thickness is added over it. Usually 12 mm an average mortar thickness I have taken. Probably on site condition, some cases it is coming to 15 mm, some cases it is coming 7 to 8 mm. Right now I have taken 12 mm. So I have added 12 mm in length. I have added 12 mm in width also because it's 230, and I have added 12 mm into depth also. So it's 12, 12 and 12, 12 and 12 mm. Okay, so the volume of one brick including mortar, it is coming 0.0022 m cube. So total volume of 1 square meter brickwork is 1 square meter into 0.23. It is coming 0.23 cubic meter. So number of bricks is required for 1 square meter is volume of 1 square meter brickwork including mortar divided by volume of brick with mortar. So for 1 square meter 9 inches brickwork, we need 101 bricks. So volume of mortar for 1 cubic meter. So it should be volume of brickwork minus volume of bricks. So 1 into 0.23 minus number of bricks into volume of each brick excluding the mortar. Okay, so here we get 0.07. In weight mortar, there is wastage on the site, so 5% is added on it. So weight volume of mortar is coming 0.07. It's in digits, so it's coming 0.07. Even though it's weight volume, when actually to get the weight volume, we have to mix the dry thing. So the dry volume required is 20% more than the weight volume. Okay, so 20% is added on it, so it is coming 0.09. So this much dry volume is required to complete 1 square meter 9 inches brickwork. Here ratio is there 1:6, 1:5 and 1:4 mortar ratios. One is cement and 6 is the reverse, and you are aware of it. So volume of cement is coming, dry volume of mortar डिवाइडेड बाय 1:6 लिया है, तो 1 + 6 करके 7 से डिवाइड किया हुआ है. तो दिस इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू द बैग्स. सो टू कंप्लीट द 1 square meter we need 0.35 bags of cement. Okay, then the इसका वॉल्यूम ऑफ रिवर सैंड, इसका मल्टीप्लीकेशन किया है 6 से. ओके, उसके बाद बल्केज ऐड किया है क्योंकि रिवर से सैंड आते टाइम रिवर का सैंड ज्यादा आता है. उसके बाद थोड़ा ड्राई साइड पे कैसा है कि जब भरते हैं तो क्लियरली वाटर का कंपोनेंट रहता है तो बल्केज आ जाता है, बट ऑन साइड हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते, थोड़ा ड्राई हो जाता है. तो इट्स 15% बल्केज आई हैव कंसीडर द एडेड ऑन इट. सो रेशियो इज कमिंग इज 0.08. तो ये कैलकुलेशन हो गए मोटर्स के हिसाब से. तो यही लिंक हमने यहाँ पे लिया हुआ है, लाइक 0.35. इसका 3% वेस्टेज ऐड किया है. अगर ये लिंक देखेंगे तो वेस्टेज फैक्टर से 3% वेस्टेज ऐड हुआ है. तो इसके हिसाब से 0.36 बैग आ गए. और ये लिंक मेटल रेट का 254 है. जस्ट हम लोग क्रॉस चेक के लिए देख लेते हैं. मेटल रेट का सीमेंट का जो रेट कंसिडर किया है 253.91, इन डिजिट पॉइंट ऑफ से उसने 254 का रेट लिया हुआ है. रिवर सैंड का रेट यहाँ पे 8,000 रुपीज है. तो 8,000 के हिसाब से द क्यूबिक मीटर इंटू द 0.08 इज वॉल्यूम एज पर कैलकुलेशन प्लस 20% वेस्टेज. ये हिसाब से देखेंगे तो 0.1 क्यूबिक मीटर लगता है. ब्रिक्स 101 प्लस 10% वेस्टेज. मिसलेंस में कैसा है कि कुछ आइटम्स ऐसे है कि जो काउंटेबल नहीं रहते हैं, कहीं पे नेल्स लगते हैं या कुछ छोटे टूल्स लगते हैं, वो कंसिडर नहीं हुए. तो यहाँ पे 2% मैंने वो कंसिडर किया हुआ है कॉस्ट में. स्कैफोल्डिंग का कॉस्ट कंसिडर किया हुआ है 1 स्क्वायर मीटर की, क्या जो लगेगा
वो हिसाब से मैंने वो कंसिडर किया है 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर से. और लेबर कॉस्ट, दिस इज द रेट विच इज गोइंग ऑन at my site, so I have considered 1 square meter rate. If we add this thing, the calculation is that ki 0.36 into 54, 92 rupees is the material cost, so it is divided put into material cost. River sand, it is put into the material, bricks material, and this is the miscellaneous material, so that's why I have taken into the material. This is the clear cut labor cost and the plant cost. Why I have divided this um, cost into this 4 category? Usually we should know the how much percentage material, how much percentage labor is going, and plant and subcontracting. Okay, so 1434 is cost is coming here. Okay, the cost is linked to the abstract sheet. So this is 1437. Then 2% for the water and electricity. Then the overhead total cost is coming, and markup is then the 20%. So on that basis, the to complete 1 square meter of 9 inches thick burn brick masonry on site, the cost will be 1876 rupees per square meter. Okay. अभी यहाँ पे क्या है कि और एक चीज है कि यूजुअली टेंडर्स जो फील करते हैं, या अगर आप कौन से भी साइट से क्लाइंट साइड से काम कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्टिंग से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रंट लोडिंग टेंडर करते हैं. फ्रंट लोडिंग टेंडर मींस द आइटम which will be executed initially on the site. The contractor usually always claim the higher percentage of profit margin there. एक्चुअली उसके पॉइंट ऑफ से उसको क्या लगता है कि वो कैश फ्लो ज्यादा मिलेगा, और कैश फ्लो रन करे उसको पहले ही कैश अच्छा मिलेगा, तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम क्रंच उसको आएगा नहीं प्रोजेक्ट रन करते टाइम. तो यूजुअली जब आइटम्स में ज्यादा परसेंटेज फ्रंट आइटम में मीन्स एक्सक्वेशन, इनिशियल आइटम्स, एक्सक्वेशन, रेनफोर्समेंट या कॉन्क्रीटिंग में लोड होते हैं ज्यादा परसेंटेज, तो यूजुअली उस टेंडर को या उस आइटम्स को फ्रंट लोडिंग टेंडर या वो टेंडर को फ्रंट लोडिंग टेंडर बोलते हैं. ठीक है, तो ये बेसिस पे 1876 का कैलकुलेशन आया हुआ है. इफ यू हैव एनी डाउट, just write down to me. Okay, I will try to clear your doubts. अभी कंक्रीट का आइटम हम लोग बाद में लेंगे, क्योंकि कंक्रीट्स में बहुत सारे फैक्टर्स है. हम कंक्रीट का एनालिसिस 2 टाइप में कर सकते हैं. एक तो आरएमसी के बाद वर्किंग होता है वो, और सेकेंड थिंग ऑन प्लांट ऑन साइट, छोटा प्लांट साइट पे रहेगा तो. ओके, सो थैंक यू फॉर just we seen the 9 inches brickwork rate analysis. ठीक है, in next video we'll see 6 inches and 4 inches brickwork rate analysis. Thank you.